This is Neha and I welcome all of you to Yogic once again. And today in this video, we are going to discuss about the yogic management of common cold. First of all, we will start with the आसन्स. ठीक है, सबसे पहले वो आसन्स जो कॉमन कोल्ड में मदद करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने में कौन से आसन्स मदद करते हैं. सबसे पहले है सूर्य नमस्कार. तो लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार. विद योर फीट टुगेदर, 1 से 2 फीट का डिस्टेंस छोड़ना है मैट से. एंड लेट्स बिगिन. एक्सहेल, स्टेप 1 प्रणामासन. इनहेल, आर्म्स अप एंड बैक, आर्च योर बैक. And exhale, go forward and down, keeping your back straight, hands straight, knees straight, going into pawanmuktasan. Inhale, right leg back, right knee down, toe down. You can stay here in ushtrasan or you can come into anjanayasan. Keep pushing your hip forward. Your front leg should be in a 90-degree angle. And stay. Change. Hands down, take your left leg back, coming into plank pose or push-up position. Hold your core here. Stay. Change. Knee chest tension down. Ashtanga Namaskar. Inhale. Balasan. Shoulders down. Neck long. Change. Exhale. Curl your toes. Push your buttock up and back. Going into pawanmuktasan. You're taking your right side forward between both your hands, placing your left knee down, toe down, and push your hip forward and take your arms up in Anjanayasan, or you can stay here in ushtrasan. Keep pushing your hip forward. अपने hip को आगे push करते रहो and look forward. Shoulders down. Change. Bring your back leg to the front. pawanmuktasan. Exhale करते हुए. Inhale, arms up and back. And exhale, and this was the first half of Surya Namaskar. Right side से और left side से भी same steps है, बस side change हो जाएगी, सिर्फ left leg आगे और पीछे जाएगा. That's it, and then you'll be done with the first round of Surya Namaskar. Okay, after Surya Namaskar, let's move on to the series. तो पहला आसन है paschimottanasan. For paschimottanasan, you need to stretch your legs to the front, flex your feet, keeping your back straight, shoulders down, और अपनी buttocks को, hip bones को अच्छे से मैट पर गढ़ा कर रखें. And inhale, take your arms up. Your palms should be facing towards the front. And stretch, 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 spine straight. And now exhale and bend from your hip joint. And you can hook your big toes, keeping your back straight, hook your big toes, or you can also hold your ankles. And then slowly recover back and down. You can do paschimottanasan for 10 seconds, 20 seconds starting में, और उसके बाद आप धीरे धीरे इसको improve करें, क्योंकि ये digestive fire को ignite करने के लिए बहुत अच्छा रहता है. डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत. Moving on to the next आसन, which is balasan. और balasan जो है वो हमारी बॉडी को, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करता है, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स कर देता है. चलिए, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव फायर जो है वो बढ़िया हो जाती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, कफ कम बनता है. दोनों पैरों को खोल लीजिए and hands on the mat and slide forward. Go forward, stretch. Bring your chest and your stomach on the mat. Stay here, breathe. And slowly coming up. You can do another variation of balasan. इसमें आपको अपने forehead को mat पे लगाना होगा और अपने हाथों को side पे rest करने दीजिए. And slowly coming up back. Moving on to the next आसन, जो कि है ushtrasan. तो ushtrasan के लिए standing on the mat और दोनों knees में hip distance छोड़े, आप अपने पैरों को
फ्लैट कर सकते हो या फिर आप अपने पैरों को कर्ल करके रख सकते हैं. इट्स अप टू यू, योर चॉइस. एंड टेकिंग योर आर्म्स ऑन योर लोअर बैक, एल्बोज को टक करें, शोल्डर्स को लॉक कर दीजिए. एंड स्क्वीज योर बटक, इनहेल, बेंड बैक. एंड वेरी स्लोली टेक योर आर्म्स बैक, रीच आउट करें, स्ट्रेच करें, एक्सटेंड करें अपने हाथों को और हील्स को पकड़ लीजिए. एंड चिन बैक. And coming back, recover. You can again stay in balasan or you can stretch your back in puppy stretch also. Moving on to the last asan of the series, which is pawanmuktasan. This is also known as wind releasing pose. Lie down, आराम से. And let's do it one by one. एक पद pawanmuktasan करते हैं पहले, single leg. Then we'll do it with both the legs. So extend your left leg and bend your right knee. And now hug your right knee and exhale. Go forward. And breathe normally here. And go back. Relax. Same thing with the left leg. Inhale. Exhale, go forward and breathe normally here. And go back. Now let's do it with both the legs. Chale. Inhale. Exhale. And breathe normally. Bring your nose or your forehead between the knees. And back. Stay. After the asan series, let's now talk about the recommendations in yogic management for common cold. ठीक है, तो सबसे पहले है आप गार्गलिंग करें, सेकंड है आप स्टीम लें, थर्ड है आप अच्छी डाइट खाएं. तो सबसे पहले गार्गलिंग, आप गर्म पानी और नमक लेकर, ठीक है, नमक पानी से गार्गलिंग करें सोर थ्रोट के कंडीशन में, बहुत बेनिफिशियल होता है. और इसके बाद स्टीम आप तब ले जब नोज़ ब्लॉक्ड है, 10 मिनट के लिए स्टीम ले, बहुत बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है. एंड थर्ड इज़ डाइट. और डाइट में प्लेन डाइट होना चाहिए, नेचुरल, प्लेन एंड हेल्दी डाइट. लाइट होनी चाहिए डाइट. फ्रूट्स ले लें, खूब सारे फ्रूट्स खाएं, और या फिर लाइट खाना खाएं. और अगर बॉडी वीक फील करी है थोड़ी तो सूप लें, वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छा रहता है, वेजिटेबल सूप लें. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड keep practicing. Stay healthy, stay motivated. I'll see you in the next video. Thank you. Namaste. Bye bye. Take care.